आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे अपने पढ़ाई में मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हमने फर्स्ट वीडियो में, इसके पहले वाली वीडियो में जैन ऑस्टिन एंड चार्ल्स डिकेंस के बारे में जाना था, उनके बारे में कंपाइल किया था। फर्स्ट जैन ऑस्टिन एंड सेकंड चार्ल्स डिकेंस, ऑथर ऑफ इंग्लिश। तो आज हम थर्ड यानी वर्जीनिया वुल्फ के बारे में जानेंगे। थर्ड इंग्लिश ऑथर नेम आर वर्जीनिया वुल्फ। अगर आपको मेरी वो फर्स्ट वीडियो देखनी है तो आप मेरी यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने उसे अवेलेबल करा दिया है। तो आज हम थर्ड वर्जीनिया वुल्फ के बारे में जानेंगे। थर्ड वर्जीनिया वुल्फ। Virginia Woolf was a major English modernist writer and literary. Virginia Woolf was a major English modernist writer and literary innovator of the 20th century. As a member of the powerful Bloomsbury group, Woolf established new grounds in narrative fiction by using an experimental and philosophical angle on character. Woolf pioneered the narrative technique. Known as stream of consciousness. This method attempts to capture and natural flow of human consciousness through writing that looks a traditional plot or structured sequence. Her most famous works that employ this innovative style include the novels Mr. Dalloway in 1925 and two. The Lighthouse in 1927. The Lighthouse in 1927. Woolf was a pioneering writer who transformed in 20th century. Literature through her poetic
physiological beauties, philologically penetrating fictions। अब हम फोर्थ इंग्लिश ऑथर को रीड करेंगे। फोर्थ इंग्लिश ऑथर नेम आर George Orwell। Let's read in lifeline of George Orwell। George Orwell, real name Eric Arthur Blair is best known for his novels Animal Farm and 1984. One of his novel Animal Farm and 1984, one of the most famous among book club books, both published in the 1940s. Through thought, he wrote numerous other works. These two satirical books cemented his legacy as one of the most influential English writer of the 20th century. Orwell introduced through provoking concepts like big brother thought crime, Newspeak, and Room 101 in 1984. This dystopian novel envisioned a totalitarian future society ruled by absolute government control and surveillance. The book highlighted the risks of dictatorship and ultimate state authority over citizens. Orwell drew from his experience with totalitarians to craft a vivid warning in fiction of where society could head.
in fiction of where society could head. Orwell gives Orwell was an English writer who left a lasting impression through his unique ability to blend sociopolitical themes with creative fiction. His novels remain widely read and discussed for their examination of government power and defense of independent thought. तो यहाँ पे हमारा फोर्थ भी क्लियर हो गया, यानी फोर्थ इंग्लिश ऑथर नेम जॉर्ज ऑरवेल भी हमने रीड कर लिया। तो अगर हमारी ये आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह और भी वीडियोस को पाने के लिए एंड एजुकेशनल टेस्ट को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।